Hello guys, welcome to my channel Virtual Pustak, and today's topic for our video is natural resources. So let's begin with the topic. The picture which you see. Looking at this picture, I will be asking you some questions. First question is, where do we see the birds? Second question is, where is the cow grazing? Third question is, locate the trees and the road. Fourth question is, where does the river come from? How does it flow? Fifth question is, where is the airplane? Sixth question is, where are the fish seen? Seventh question is, on what is the sailboat floating? So you guys can see that some things in the picture are in the water, some on the land, and some in the sky, that is in the air. And thus all these things on the earth are associated with air, water and land. Associate means in connection between the things. Air, water and land are called Earth's atmosphere, Earth's hydrosphere, Earth's lithosphere respectively. Like air is called atmosphere, water is called hydrosphere and land is called lithosphere. What do you mean by sphere? Sphere is the area. Moreover, different living things occupy these three spheres of the earth. For example, as I told in the question, like मैंने question में बोला कि birds occupy the atmosphere, the air, and many flying things which they covers the air, they occupy that area ना, वो area में रहते तो वो चीज़ को occupy करते हैं. For example, like we as human beings, we animals and all, they occupy the land, just lithosphere. And another is fishes, whales, boats and all, they occupy which area? The hydrosphere, which is the water area. These living things in the parts of lithosphere, hydrosphere, atmosphere which they occupy are together called the biosphere. Like living things हो या air, land, water, उसे पूरा comprehensive term है, पूरा मिला के हम बोलेंगे उसे biosphere बोलेंगे. These spheres have formed on earth naturally. They are formed naturally born हुआ. किसी ह्यूमन बीइंग ने ये सब स्पीयर्स को नहीं बनाया. लाइक फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन बीइंग ने एयर को नहीं बनाया, लैंड को नहीं बनाया, वाटर को नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बना है. वैसे air, water and land are the important factors for sustaining the living world on the earth and fulfilling their basic needs. These are called natural resources, which means air, water and land are very important for the human beings, for the living beings, like for animals, plant, to live their life on the earth. अपना life जीने के लिए वो it's very this three things are very very important, and that's why it is said natural resources. ये हमें nature ने दिया है, so it is a natural resources for us. We use that resources. What is an atmosphere? The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth, which is the layer of air covers the earth fully and even protects the earth. The surface of earth comprises of water and land. Comprises means which contains water and land. Water is more than land on the earth. Like water is 71% on earth, then land is 29% on earth. Land is less than water. The hydrosphere occupies much larger part than lithosphere. As I said, water is more than land. We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous. जैसे lithosphere is solid, hydrosphere is liquid and atmosphere is gaseous. हम ऐसे बोलते हैं, solid, liquid, gaseous भी बोलते हैं. Let's talk about air and the atmosphere in detail. The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. You can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of Earth's atmosphere. There are 5 layers of atmosphere. First one is exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere and troposphere. The troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the air, while the proportion is about 19% in stratosphere. Troposphere is closest to Earth and next is stratosphere, which is the ozone layer. Further in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the masses of gases goes on decreasing. Ionosphere, which includes exosphere, thermosphere and some part of mesosphere, wherein it says that far you go from Earth, the air gets decreasing.
Like it is said, you have also even heard that in space there is no oxygen, there is no air. Gases are not found in the exosphere and beyond, which I said the meaning earlier, that if you go far from the earth, the air and the gases are not found there. कि if you're close to the earth surface there will be air, but if you go beyond the earth surface, earth से आगे आगे जाओगे, so वहाँ पे air बहुत कम हो जाएगा. वैसे have a look on this pie chart. From this pie chart, you can see that air is a mixture of several gases. Beside this, air also contains water vapor and dust particles. Now talking about water vapor. If you boil water, जो बॉईल करने के टाइम जो धुआं निकलता है, जो गैस फॉर्म निकलता है, तो वो वाटर वेपर होता है. ये बॉईल का हो गया, हीट करने पे वाटर वेपर निकलता है. सो टॉकिंग अबाउट डस्ट पार्टिकल्स, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम, डार्क रूम, और एक छोटे से विंडो से सनलाइट आ रहा है, जो सनलाइट के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, तो वो हो गया डस्ट पार्टिकल्स. ये डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में होता है. हैव अ लुक ऑन दिस पाई चार्ट और पाई डायग्राम. What it shows that कि nitrogen in the atmosphere is 78%, oxygen is 21%, argon is 0.9%, other constituents of air 0.07%, and carbon dioxide is 0.03%. So let's talk about the uses of these gases in our daily day-to-day life. Talking about nitrogen first, nitrogen helps living things to build the necessary proteins. As you guys know, proteins plays a very important role for our growth. And nitrogen is useful for production of ammonia. Ammonia is used to clean things, clean stuff. Cleaning liquid है वो ammonia. And nitrogen is also used in airtight packaging of food stuff. Like for example, Lays, cans. ये सब airtight चीज़ों के लिए हम लोग nitrogen यूज़ करते हैं. Next is oxygen. Oxygen is necessary for respiration in living things and for combustion. Talking about respiration, oxygen is like we inhale oxygen. हम अंदर सांस लेते बोलते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं वो oxygen हम लेते हैं. So it's very important for living organism or living things to live their life. Without oxygen, no living thing can survive. Now talking about combustion. Combustion means a process of burning. Like कोई fire लगाना एक stick को. Without oxygen, no fire can be lit. कोई fire नहीं जला सकते without oxygen. The oxygen plays a very important role in everything. Now talking about carbon dioxide. Plant use it for producing their food. जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे plants food बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है. Okay, for example, if we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. लाइक जब हम सांस लेते हैं अंदर और सब सांस छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन छोड़ते नहीं हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करती है अपना फूड बनाने के लिए. एंड एज आई सेड, हम फायर लगाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और हम फायर बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. जब कोई कैंडल को बुझाना हो तो व्हाट यू डू गाइस, यू ब्लो कैंडल, एंड वेरिन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. जब कोई बड़े प्लेसेस पे आग लगता है तो यू सी दैट रेड कलर का सिलेंडर जैसा, जिसमें बहुत वाइट एयर आता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फायर बुझाने के लिए. फायर एक्सटिंग्विशर सुना होगा आप लोग ने. अबाउट आर्गन. आर्गन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. जब इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आर्गन गैस का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करने के लिए आर्गन गैस होता है वो बल्ब के अंदर. Now talking about helium. Helium is used for obtaining low temperature. For example, किसी चीज़ का टेम्परेचर का हाई हो जाता है तो helium is used to reduce the temperature. And second is helium is used for generating lift in airships. जब कोई एयरशिप होता है लिफ्ट करने के लिए तो वो हीलियम का यूज़ करता है उसको उड़ाने. Now talking about neon. Neon is used in decorative lights or for the street lights. नियॉन गैस के थ्रू लाइट आता है. स्ट्रीट लाइट्स देखा होगा आपने, डेकोरेटिव लाइट्स देखे होंगे, दिवाली में लगते हैं, वो सब नियॉन गैस के थ्रू लाइक लाइट देता है. नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिप्टन. क्रिप्टन गैस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर द लाइट ट्यूब्स. लाइक दिस फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर जो क्रिप्टन गैस है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देता है, लाइक डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्राइटनेस. कभी कभी आर्गन के बदले क्रिप्टन भी यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर.
Talking about xenon, xenon is a gas which is used in flash photography. जब कोई फोटोग्राफर होता है उसका जो लैम्प होता है, इलेक्ट्रिक लैम्प, वो xenon क्या गैस से बना होता है, उसके लाइट के अंदर xenon गैस होता है. The living world on the earth is sustained due to balance between various gases and other constituents of air. ये गैसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर के बैलेंस की वजह से जो लिविंग वर्ल्ड है वो एक अच्छा अलाइव एंड हेल्दी लाइफ जी रही है. दे सस्टेन मीन्स टू मेक समथिंग कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग लेस. तो ये सस्टेन होते जा रहे, लॉन्ग पीरियड चलते जा रहा है अर्थ का. वैसे the atmosphere is very important filter. Like for example, atmosphere filters all the harmful things from the air. Like जो भी space से अपने earth की तरफ आ रहा है, तो जो atmosphere है वो उसे protect कर रहा है, filter होके अच्छा thing like earth के अंदर enter होने दे रहा है. It allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for the life. Sun plays a very important role in our life. It gives us vitamin D for our bones. And the atmosphere prevents the harmful elements from reaching the earth, as we studied and as we have discussed about it earlier. It is in the atmosphere that fog, clouds, snow and rain are produced. Like in the sky, this clouds, fog, snow are produced. Like from the sky snow comes, from the rain sky से आता है, snow भी sky में बनता है, clouds भी sky में बनता है, fog भी sky से होता है. वैसे let's talk about air pollution. I'm giving you 3 pictures. All the 3 pictures show the large scale emission of smoke. Large scale emission यानी बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ कर रहा है. एमिशन यानी रिलीज़ होना. तो डिफरेंट एजेंसी, ये 2-3 जो डिफरेंट एजेंसीज है. फर्स्ट एजेंसी क्या है? चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री. सेकेंड पिक्चर इज़ अबाउट अ कार रिलीजिंग स्मोक. आपने देखा होगा कार के पीछे से वो स्मोक गैस निकलता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है. एंड थर्ड पिक्चर इज़ अबाउट अ फॉरेस्ट गेटिंग इनटू फायर. जब फॉरेस्ट में आग लगता है तो इससे फायर निकलता है, तो उसका स्मोक भी बहुत डेंजरस होता है. दिस स्मोक्स डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फियर, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. एज वी स्टडीड इन द अबाउट सेंटेंस कि the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air. जब ये बैलेंस ये स्मोक की वजह से डिस्टर्ब होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन. These are the harmful gases which are released from the vehicles, industries. Like this is done by the combustion of fuels. Combustion of fuels यानी burning of fuel जब होता है तो vehicle से smoke निकलता है, big industry से smoke निकलता है. जब incomplete combustion of fuels होता है यानी incomplete fuel को जलाता है, कोई आधा उधरा fuel जलता है तो उसमें से बहुत खतरनाक गैस निकलता है. Like for example जब wood और coal कभी हम burn करते हैं तो जो gases निकलता है it is very bad for the atmosphere. It creates air pollution. Now what are the substances released in the air to the combustion of fuel? कौन से substances जो फ्यूल से निकलते हैं? वो फर्स्ट सब्सटेंस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट. पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें हम वाटर एंड लैंड के बारे में सीखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्चुअल पुस्तक. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट.